friends, in this video I am going to discuss with you again a new design pattern, that is Facade Design Pattern, right? And for this, let's check out the real world scenario, right? So in case of real world scenario, if I says I want to purchase something online, how I can purchase it? Of course, in case of e-commerce website interface, or let's go some time back where I make an order using my phone. So I will make a call to the operator only, or the telephone operator only, or I am making the interaction with the UI only, right? To make a request to the company for the purchase. Then what happens? Let's discuss about the operator only. The operator provide you with a simple voice interface. ऑपरेटर का काम क्या है? वो हमारे से सिर्फ सिंपली इंटरेक्ट करता है इन अवर नेटिव लैंग्वेज, राइट? उसके बाद क्या होता है? इट टेक द ऑर्डर इन द बैक एंड. व्हाट इट डू? इट इज इमैटेरियल, हमें नहीं पता वो क्या कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पर्सन हु वांट टू मेक अ ऑर्डर. दिस इज द ऑपरेटर जो यहाँ से क्या ले रहा है? आपका ऑर्डर ले रहा है. और उसके बाद पीछे क्या हो रहा है? There can be the warehouse, there can be the packaging, there can be the delivery, there can be the payment process, there can be the supplier who are supplying the material, and the taxes can be there. The department that take care of all the taxes that we are paying to the company. That can be the sales tax, that can be the excise or something else. All the taxes that can be there, right? So, in case we are interacting with the operator, we don't care about this. This is a real world scenario, right? In case we want to provide this functionality in our software, right, we have to think of some design pattern. The Facade Design Pattern is there, right? Let's go for a little bit of additional things, right? Imagine that you must make your code work with a broad set of objects that belong to a sophisticated library or framework. ठीक है, हमें क्या करना है? हमें एक ऐसा कोड बनाना है जो क्या करे, बैक एंड में हमने एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी परचेज की है या कोई हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ऊपर हमने क्या करना है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है विच मेक द थिंग्स सिंपल. ठीक है, अगर हम वो सिंपल नहीं करते तो तरीका क्या है हमारे पास? ऑर्डिनरली यू विल नीड टू इनिशियलाइज ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. जो हमें चाहिए या नहीं चाहिए, हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करेंगे, राइट? कीप देयर ट्रैक ऑफ देयर डिपेंडेंसीज. उनका वे ऑफ वर्किंग क्या है, पहले कौन सा काम करता है, दूसरा फिर कौन सा काम करता है, देयर कॉन्टिन्यूटी, एंड एग्जीक्यूट द मेथड इन द करेक्ट ऑर्डर एंड सो ऑन. इन केस वी डू नॉट डू दिस, देन व्हाट हैपन्स? द प्रॉब्लम कैन बी देयर. फॉर एग्जाम्पल, let's go for another scenario, that is the scenario of withdrawal from the ATM machine or getting the mini statement from the ATM machine. What the ways? Later on, what we want? I want to add a new feature to the ATM machine. सबसे पहले मेरा काम क्या है? सबसे पहले मैं अपना एक कार्ड लगाऊंगा. If the card is valid, then it will allow me to enter my OTP or the PIN, right? Once PIN is validated, it give me the access to the menu where I can provide my requirement. I want to go for the withdrawal, I want to go for the mini statement, or I want to include a new feature. Please keep it in mind, the new feature जो मुझे करना है, जो मुझे ऐड करना है इसमें. ठीक है, मैं दो फीचर मेरे को आते हैं क्या, या मेरी मशीन प्रोवाइड करती है क्या? मिनी स्टेटमेंट निकालना और पैसे निकालना. अब इन सारों के लिए मेरे पास दो पॉइंट क्लियर है क्या? सबसे पहले मेरा वैलिड कार्ड होना चाहिए. अगर वैलिड कार्ड नहीं है तो मशीन ऑन द स्पॉट विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन इट चेक इट आउट एंड इट थ्रो इट आउट कि नहीं भैया, इट इज नॉट अ वैलिड कार्ड. सेकेंड, अगर वो वैलिड है तो इट टेक माई पिन, एंड इफ द पिन इज एक्सेप्टेड देन इट अलाउ मी टू गो फॉर द स्क्रीन, अदरवाइज नो. अगर मुझे कोई नया फीचर डालना है तो ये दोनों काम तो सेम है ना. ठीक है, नया काम क्या है? मुझे एटीएम मशीन से अपना बिजली का बिल जमा कराना है या मुझे कोई बिल जमा कराना है. ठीक है, तो उसके लिए दोनों चीज़ों कॉमन है. अगर मैं एक नया फंक्शन बनाना चाहता हूँ तो मुझे पहले ये दोनों कॉल करने पड़ेंगे और उसके बाद अपना फंक्शन बनाना पड़ेगा, एंड देन आई कैन गो फॉर द रिमेनिंग पार्ट, राइट? तो इस सारे को करने के लिए या तो मुझे सारा कुछ क्लियर होना चाहिए,
दूसरा क्या है, मेरे को फंक्शन का पता हो और मैं क्या करूँ, एक नया फंक्शन बनाऊँ या एक नई क्लास बनाऊँ विच टेक केयर ऑफ द बिलिंग सिस्टम। ठीक है, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। एज अ रिजल्ट द बिजनेस लॉजिक ऑफ योर क्लास वुड बिकम टाइटली कपल्ड। अगर ये सारा कुछ आप बना देते हो, मतलब अगर आपने 3 फंक्शन बना दिए और इकट्ठे कर दिए तो क्या होगा, द कपलिंग विल बी हाई। And we all know, in case we want to make a reusable software, the coupling must be least as possible so that it can be reused, right? And for this the solution is a facade is a class that provides a simple interface। तो facade है क्या, हम facade design pattern की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम एक facade design pattern की बात करते हैं तो what we are going to do, we are going to create a simple interface, ठीक है, टू अ कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम विच कंटेन्स लॉट्स ऑफ मूविंग पार्ट्स। अब मैं एटीएम मशीन की बात कर रहा था, तो इसके अंदर मूविंग पार्ट्स क्या हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर, राइट। तो जो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट फंक्शंस हैं, वी कैन कॉल देम एज द मूविंग पार्ट्स। जो फंक्शन हमें क्या कर रहा है, हमारे कार्ड को वैलिडेट कर रहा है, जो फंक्शन हमारे पिन को वैलिडेट कर रहा है, वी कैन कॉल देम एज द मूविंग पार्ट। अ facade might provide limited functionality in comparison to working with the subsystems directly। हमारे पास बहुत सारे सब सिस्टम है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक फैक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, हम एक फंक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके अंदर क्या है, एडिशनल फंक्शनलिटी देनी है, राइट, यूजिंग द बेसिक फंक्शंस विच आर ऑलरेडी देयर प्लस सम एड ऑन फंक्शन, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, हमारा जो फैक्ट है दैट विल प्रोवाइड्स अस अ सिंपल या सिंगल फंक्शनैलिटी, नॉट द ऑल, राइट। हाउएवर इट इंक्लूड्स ओनली दोज फीचर दैट क्लाइंट रियली केयर अबाउट। अभी हमारे सिस्टम में हमें क्या चाहिए, अरे यार बिलिंग सिस्टम चाहिए हमें, तो हमारा जो बिल पे हो जाए बस उसका सिस्टम प्रोवाइड करो, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स ओनली दोज फीचर दैट क्लाइंट रियली केयर अबाउट। हमारे को जो या हमारे क्लाइंट को क्या चाहिए भैया, बाकी सब कुछ तो हो रहा है, तो उनके लिए फैक्ट या लाइब्रेरी आर देयर, interfaces are there, we want to integrate या we want to create a new system that take care about our the billing system, right। Next point, having a facade is handy when you need to integrate your app with a sophisticated library that has dozens of features but you just need a tiny bit of its functionality। मतलब अगर हमें एक नया फीचर डालना है और उसके लिए हमें क्या चाहिए, छोटे छोटे पार्ट चाहिए, क्या वैलिडेशन वाले, तो हम क्या करेंगे, we will go for the facade। Right, now let's go for the detail of facade design pattern। Facade pattern hides the complexity of the system and provides an interface to the client। मतलब ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, पीछे के सारे फंक्शन, चाहे वो लाइब्रेरी से आ रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी से आ रहे हैं, उनको सारों को क्या कर देता है, इट हाइड्स फ्रॉम द यूजर, राइट। डोंट से इट इज द एंड यूजर, राइट। आई विल टेल यू whom I am talking about, the user, right, using which the client can access the system। This type of design pattern comes under the structural design pattern। Prior to this video, we have discussed there are 3 types of design pattern। First is creational, second is structural, third is behavioral, right। This design pattern comes under the category of structural design pattern as this pattern adds an interface to the existing system। ये क्या कर रहा है, पुराना सिस्टम पड़ा हुआ है, उसके अंदर एक नई चीज या एक नया इंटरफेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। दिस पैटर्न इन्वॉल्व्स अ सिंगल क्लास विच प्रोवाइड्स सिंप्लीफाइड मेथड रिक्वायर्ड बाय क्लाइंट एंड डेलीगेट्स कॉल्स टू द मेथड ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम क्लासेस। मतलब ये क्या करता है, इस पैटर्न के अंदर एक सिंगल क्लास बनती है जो क्या करती है, विच इज एट द टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग libraries or the classes that are provided by the sophisticated library or the framework, right। We can understand or we can develop this using this example। For this, what I will say, this big block give us the view of a library। That means this is a library that is already created by the third party। This is the client, the reason being main that is going to make the use of this, right। On the top of this library, what I want to make the things simple। So for that, I am going to create this class। Of course, this class will behave like the interface, or I will call this class as the call this class as the facade, right। And for working with this, let's
develop it using Eclipse. Or if I says what you have to create for this, first create this shape interface having one function draw. Just see, this is the public interface named shape having a single function, that is draw. We can have multiple functions, right? For the understanding purpose, I am going to make the things as simple as possible. Later on, we can create the facade related to the complex problems, right? So this first point is clear. This one I have created. Next, we will create the three concrete classes named circle, rectangle, and square. What their job is? Just to override the draw function as well as to provide the functionality for the draw function. This one is clear. This one is a circle having the definition or the functionality for the draw function. This is a rectangle having the functionality for the draw function, and the square, right? Any doubt till this, you can provide me as a message so that I can resolve it. So I have created this. So what I am assuming, this is the library. On the top of this, what I want to create a class, I want to create an interface which provide the functionality of, which collect the functionality of all of these, right? And having the name as shape maker, having three member variables and some member functions as well as a constructor, right? 1, 2, 3, 4. These classes are clear. Next, let's go for the shape maker. Shape maker class contain three references named circle, rectangle, and square of shape type, right? And they all will contain, the circle will contain the object of circle, the rectangle will contain the object of rectangle. Of course, they are the concrete classes. Square will contain the object of the square class. Of course, that is also one of the concrete classes, and that all this all is done in the constructor of the class, that is shape maker. Next, what I have done, I have created the public function, or I have created the three interfaces, public interfaces, using which what I can do, I can make the uses of the draw from circle or rectangle or square. So this is the functionality, this is the main functionality that is very complex, that we are assuming is as very complex. For the timing, we have taken it as very simple. It can consist of multiple functions, right? For the simplicity, I have taken the one function, that is draw. और फिर मैंने क्या किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है ड्रॉ सर्कल, जिसमें सर्कल डॉट ड्रॉ. सर्कल कौन सा है? ये वाला नहीं है, ये वाला है. सर्कल इज अ ऑफ टाइप शेप. Circle is a reference of type shape having the object of circle class. Same is with the rectangle, with the square. So this is the facade that I have created. Next, let's go for the client. What its job is, what this is doing. It is just making the object of the facade, that is a shape maker, with the help of the shape maker class itself, using the constructor. Its constructor consists of the definition of the three shapes named circle, rectangle, and square. And so all these are initialized. Then what it is doing? Facade, that is shape maker, dot draw circle, dot draw rectangle, dot draw square. And what these are? These are the methods of the facade only. Internally, what they are going to do? They are going to make the call to the third party system or the framework system or the complex system that is provided by the third party, right? Now let's try to execute it. What I am getting? Circle draw, rectangle draw, square draw. And from where I am getting this? I am getting this from the draw of circle class, draw of rectangle class, and draw of square class, right?
I think the facade is clear. You will practically, you will have a library following this structure, or the third party software following this structure. You will create this to use this, but not directly, with the help of this, which is an interface. Because of this interface, what we are doing, we are decreasing, or we are removing this complexity from the end user, from the client, right? So this is the simplest example of the facade design pattern. In case you are using this for your project, it will remove the, or it will decrease the complexity provided by the third party framework or library. Thank you.